Hello students and welcome to Skholar IAS, your one-stop solution to UPSC preparation. I am Shubhangi Sharma, your faculty for history and culture. And students, in this particular video, we have come up with another important topic for your prelims preparation. Now, as we all know, prelims will be coming up really soon and hoping that it will be happening on the day which has been given forward by UPSC. So students, with respect to history and culture, there are certain themes which are recurrent in nature. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हिस्ट्री और कल्चर के अंदर जिसमें जो टॉपिक है उससे लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस आने की. लगभग हर साल हमें उस टॉपिक के ऊपर से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं. Keeping this point in mind, students, you must know that in history particularly, there is a topic that is the heterodox religions, that is Buddhism and Jainism, from which every year we see minimum 2 questions, minimum 1 से 2 क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म में से देखने को मिलेंगे, कभी कभी उससे ज्यादा भी आ जाते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो टॉपिक हर साल आ रहा है जिसमें से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रेकरेंट थीम बोला जाता है और उनका रिवीजन एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी लाइक्लीहुड आने की बहुत ज्यादा है. Now students, keeping this in mind, I have prepared a small introduction for you guys with respect to Buddhism, which we are going to discuss in this particular lecture. So let's move forward. Let me share my screen with you guys. All right, students. So as I have just told you, this particular lecture, we will be talking about the rise of Buddhism in ancient India. Now, students, as a part of this particular lecture, the topics that will be covered are presented on your screen. And herein, we are going to discuss some important details about Lord Buddha. वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कौन सी सिटी प्रोमिनेंट थी उनके लिए, etc. उसके बाद students, we are going to talk about some important places that were visited by Gautam Buddha. Now students, there was a question in previous years wherein certain places were located by UPSC and they asked us that which of these places are of prominence in the life of Lord Buddha. And that is why all the places that were visited by Lord Buddha are important for us to remember. Apart from the students, we are going to talk about the contemporary followers of Lord Buddha. Contemporary मतलब जो Lord Buddha के टाइम पे लोग थे, जो उनके followers थे, उनमें जो prominent लोग थे, उनके नाम हम discuss करेंगे. Now here in students, जब बुद्धिज्म फैलने लगा तो उस टाइम पे बहुत सारे किंगडम्स के जो रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने बुद्धा के टेनेट्स को फॉलो करना शुरू किया and that is why their names will be very, very important. Next, students, of course, we are going to talk about some important religious teachings that were imparted by Lord Buddha. Following that, students, we are going to talk about some important Buddhist texts. And finally, students, on the basis of this particular discussion, we are going to look into some previous year questions and try and answer them. So let's move forward. Now, here in students, सबसे पहले हम Lord Buddha की basic details देख लेते हैं. Wherein you must know that he was born in a village known as Lumbini in Kapilavastu, Nepal. Now, the year in which he was born is mentioned as 563 BC in the Shaka Kshatriya clan. तो लुम्बिनी विलेज कपिलावस्तु नेपाल में 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और जिस क्लैन में इनका जन्म हुआ था उससे बोलते हैं शाक्य क्षत्रिय. All right, now students, this clan considered themselves to be the descendants of the Ikshvaku dynasty. तो ये term Ikshvaku dynasty आपको याद रखनी है. Now students, Lord Buddha died in 483 BC at the age of 80 near a place known as Kushinara, and the event of his death is known as Mahaparinirvana. तो उनकी जो डेथ थी उसके इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा और कुशीनारा नाम की जगह पर उनकी डेथ हुई थी. तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है लॉर्ड बुद्धा के बर्थ और डेथ के रिलेटेड. Now students, next we are going to talk about some important places that were visited by Lord Buddha during his lifetime. Now these include that after leaving his home, as we all know, Lord Buddha was born as a prince named Siddhartha. After some time, also students, he was married. However, after some time, he decided that he wants to leave this material world in search of enlightenment. As a part of the students, he decided to leave his palace in search of enlightenment,
wherein after that he visited a place known as Vaishali, and herein students he learnt the Sankhya philosophy or the Sankhya Darshan. After Vaishali students, he went on to another place known as Rajgriha, wherein he learnt the practice of yoga. After Rajgriha, he went to another place which is known as Uruvel. And this is particularly important, students, because herein he attained quote unquote enlightenment at the age of 35. Now, students, the event under which Lord Buddha attained enlightenment in Uruvel under a peepal tree is known as Sambodhi. तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो उनकी डेथ का इवेंट है उसे महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, और जिस टाइम पे उन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया था उरुवेल में, उस इवेंट को बोलते हैं संबोधि. तो ये जो टर्म्स है स्टूडेंट्स, इनका मीनिंग आपको याद रखना है. After Uruvel students, he went to Sarnath, and herein he delivered his first sermon, and this event was known as Dharma Chakra Parivartana. तो हमने डेथ के इवेंट का नाम पढ़ लिया, एनलाइटनमेंट जब अटेन करी थी उस इवेंट का नाम पढ़ लिया. उसके बाद स्टूडेंट्स वो गए सारनाथ, जहां पे जाके उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, और इस इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन. तो ये तीनों टाइटल्स आपको याद रखने हैं, और इनसे क्या इवेंट एसोसिएटेड है ये आपको याद रखना है. Apart from the students, you must know that the maximum number of sermons that were given by Lord Buddha were in a place known as Shravasti, whereas there was another important kingdom at this point of time, that is Magad, which he created as his promotional center. तो स्टूडेंट्स इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार यूपीएससी पूछ लेता है. यू मे बी आस्क्ड दैट व्हिच वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम sermons. So the answer will be Shravasti. तो इस तरह की लोकेशंस और यहाँ से बुद्धा की लाइफ में क्या एसोसिएटेड है ये आपको याद रखना है. Apart from the students, you must know names of 8 important places which is known as Asht Mahasthan. अब अष्ट महास्थान क्या है? Basically, it refers to 8 significant places that are associated with the life of Lord Buddha. Now, these 8 places, students, include Lumbini, where he was born, Bodh Gaya, wherein he attained enlightenment, Sarnath, wherein he delivered his first sermon, Kushinagar, the place wherein he died, Shravasti, from where he delivered the maximum sermons. Then there were 3 other places which he used to visit frequently, that is Sankisa, Rajgriha and Vaishali. तो स्टूडेंट्स ये जो 8 जगह हैं इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं. ये बुद्धा की लाइफ से बहुत ही प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड है. Apart from the students, now we are going to talk about some important rulers who were contemporary to Lord Buddha and also became his followers. Now these include, students, the ruler of Magad kingdom, that is Ajatshatru, then the ruler of Koshala kingdom, that is Prasenjit, the ruler of Vatsa kingdom, that is Udayan, and the ruler of the Shurasen kingdom, which is Avanti Putra. तो यहाँ पे आपको रूलर, उनका किंगडम, इन दोनों को याद रखना है. ये मैच द फॉलोइंग की तरह भी आते हैं स्टूडेंट्स काफी बार, और इसकी जगह आपको ये भी याद रखना है कि ये सब बुद्धा के फॉलोअर्स थे और उनके कंटेम्पररीज थे. ऑलराइट, सो दिस पर्टिकुलर टेबल विल बी very important for you guys. Now students, we are going to talk about some important religious teachings that were put forward by Lord Buddha as a part of the tenets of Buddhism. Now here in students, Buddhism was based upon a concept known as Triratan. Now Triratan included Lord Buddha, his Dhamma and his Sangha. तो त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या 3 चीजें इनकॉर्पोरेटेड हैं वो आपको याद रखनी है. और ये जो त्रिरत्न है स्टूडेंट्स, ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बुद्धिज्म को समझने के लिए. सो त्रिरत्न इंक्लूड्स बुद्धा, धम्म एंड संघ. Apart from the students, Buddha propagated Ashtangik Marg or the Eightfold Marg, which was also known as the Madhya Marg. तो जो उनकी रिलीजियस फिलॉसफी थी वो थी एक 8-fold path या मध्य मार्ग, यानी कि मिडिल रास्ता. Apart from the students, he was always silent on the discussion of the existence of God. However, he believed in the concept of rebirth. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, whether Buddhists believed in the concept of rebirth or not,
इस तरह के आपको काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं और इसीलिए इस टाइप के रिलीजियस टीचिंग्स को आप याद रखेंगे. Apart from the students, Buddha was against the caste system and thus opened the gates of Buddhism for all the castes. Now here in students, I would like to give you a background. Basically, the heterodox religions such as Buddhism and Jainism were rising at that point of time, wherein the existence of Brahmanical identity was very, very prominent. जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, जो ब्राह्मणिकल कल्चर था उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम था, जिसके अंदर लोग अपने कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड थे और लोअर कास्ट जो थी पर्टिकुलरली उनके पास बहुत ज्यादा राइट्स नहीं थे. और इसीलिए स्टूडेंट्स, जब ये हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स बढ़कर आ गया है जैसे कि बुद्धिज्म, इन्होंने कास्ट सिस्टम की अवहेलना करी, इन्होंने कास्ट सिस्टम को गलत माना और जो भी लोग बुद्धिज्म को ज्वाइन करना चाहते थे उन्हें बिना किसी कास्ट बार के ज्वाइन करने दिया. And that is why students, particularly the people who belong to the lower castes of the Brahmanical society, were drawn towards becoming the followers of Lord Buddha. Apart from the students, Buddhism or Lord Buddha also gave women permission to be admitted in Sangha. Now students, considering the time of ancient India, this was a very, very advanced thought process that Lord Buddha had, wherein women did not have a lot of rights, and that is why permitting them to be a part of Sangha was a very different kind of move. Apart from the students, Buddha suggested that when desires are conquered, then nirvana will be attained, which means that a man will become free from the cycle of birth and rebirth. यानी कि स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर हमें निर्वाणा या एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन मिलती है. द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज दैट व्हेन अ पर्सन अचीव्स निर्वाणा, देन दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, and this can be done only when the desires are conquered by that particular person. तो अगर हम अपने डिजायर्स को कॉन्कर करने में सक्सेसफुल होंगे तो हम निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से बाहर निकल आएंगे. Apart from the students, you must also know that the chief disciple of Lord Buddha was Upali and his most favorite disciple was known as Anand. तो इन दोनों के नाम भी आप याद रखेंगे, जो एक चीफ डिसाइपल हैं और एक उनके फेवरेट डिसाइपल थे. Apart from the students, now we are going to talk a little bit about some important Buddhist literature. Now here in students, the basic tenets of Buddhism are incorporated in a corpus known as Tripitak. पिटक का लिटरली मतलब होता है स्टूडेंट्स बास्केट और त्री का मतलब होता है थ्री. तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दिस मींस ट्रिपल बास्केट और थ्री बास्केट्स. तो ये जो तीन बास्केट्स थी, इट टॉक्स अबाउट थ्री टेक्स्ट and these are very, very important to understand the basic tenets of Buddhist literature. यहाँ पे स्टूडेंट्स, लिटरेचर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी. बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो दो टाइप के वेरिएशंस में डिवाइडेड है, दैट इज कैनोनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट्स. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो कैनोनिकल टेक्स्ट्स हैं, they basically talk about the state and society during the time of Buddha. On the other hand, students, when we talk about the non-canonical texts, it basically refers to the Jataka tales, which talk about the life of the previous births of Lord Buddha. ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ये डिस्टिंक्शन याद रखना है कि कैनोनिकल लिटरेचर बुद्धिज्म में क्या होती है और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर बुद्धिज्म के अंदर क्या होती है. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस बुद्धिस्ट लिटरेचर कॉन्सेप्ट. हम त्रिपिटक की बात कर रहे थे, तीन बास्केट, और ये जो तीन टेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म को समझने के लिए, बिकॉज दे वर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ स्टडिंग बुद्धिज्म. Now, in these three text students, the first one is Sutta Pitak, which is basically the encyclopedia of Buddhist thought and the religious ideas of Lord Buddha. तो जो पहली टेक्स्ट है त्रिपिटक में वो है सुत्त पिटक,
और उसको बुद्धिस्ट थॉट का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है, यानी कि बहुत डिटेल में लॉर्ड बुद्ध क्या सोचते थे, उनके क्या रिलीजियस आइडियाज थे, उन सब का वर्णन आपको सुत्त पिटक में मिलेगा। Now students, the Sutta Pitak is divided into 5 nikayas. निकाया का मतलब बेसिकली होता है कलेक्शन, ओके, कलेक्शन, या फिर आपको सुत्त पिटक के अंदर वेरी और टूटे हुए कलेक्शंस मिलेंगे, उनको बोलते हैं निकाय, ओके। तो सुत्त पिटक इज डिवाइडेड इनटू 5 निकाय, विच इज द दीघ निकाय, द मध्यमा निकाय, द संयुक्त निकाय, द अंगुत्तरा निकाय एंड द खुद्दक निकाय। ऑलराइट, तो ये सब अलग अलग चीजों के अलग अलग डिस्कोर्सेस के कलेक्शन है। 5 निकाय में सुत्त पिटक डिवाइडेड है, ये आपको याद रखना है और इन पांचों का नाम आपको याद रखना है। Apart from the students, Sutta Pitak also included some other literature such as the Therigatha, another text known as Sutta Nipat. Now here in students, it will be very important to note that the Sutta Nipat is the oldest Buddhist text. Apart from this, the Sutta Pitak also consists of another important text that is known as Dhammapada, and this is considered as the Gita by Buddhists. तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स जो सुत्त पिटक से रिलेटेड है। आप सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि सुत्त पिटक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इनकॉर्पोरेटेड है, दैट इज बुद्धास आइडियाज एंड रिलीजियस थॉट्स। 5 निकाय में वो डिवाइडेड है, उन पांचों के नाम, और कौन सी 3 और टेक्स्ट हैं जो सुत्त पिटक का पार्ट है, दैट इज थेरीगाथा, सुत्त निपट एंड धम्मपदा, ओके। Apart from the students, apart from Sutta Pitak, another important text of Tripitak was the Vinaya Pitak. Now, Vinaya Pitak is the rules of Buddhist Sangha. तो हम सब जानते हैं कि बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो एक संघ में रहते थे, साथ में रहते थे, एंड दे लिव्ड अ चास्ट लाइफ। तो इस संघ में रहने के जो पर्टिकुलर रूल्स थे वो आपको विनय पिटक में पढ़ने को मिलेंगे। Apart from Vinay Pitak students, the third important text of Tripitak was the Abhidhamma Pitak, and this consists of the Buddhist principles and the concept of Dhamma. तो जो बुद्धा का धम्म था यानी धर्म का जो कॉन्सेप्ट था उसका जो वर्णन है वो आपको अभिधम्म पिटक में मिलेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, वो ये है दैट अभिधम्म पिटक was the earliest was the most new text among these 3. तो सबसे लेट जो किताब लिखी गई थी वो थी अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक उसके कंपैरिजन में पुरानी किताबें हैं, ओके। तो त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। नाउ दीज इंक्लूड महावस्तु एंड ललित विस्तार। Mahavastu students was written by the Hinayan sect of Buddhism, whereas the Lalit Vistar was written by the Mahayana sect of Buddhism, and both of these texts are considered as biographies of Lord Buddha. तो यहाँ पे आपको इन दोनों के नाम, ये दोनों के सेक्ट को बिलोंग करते थे और ये किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है। Apart from the students, another important Buddhist text was Milindapana, which was written in the Pali language. अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं, जब लॉर्ड बुद्धा ने इनिशियली बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करना शुरू किया था तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज को यूज करना शुरू किया था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बातों को समझ पाए। एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स वो जो अपने सरमन्स भी देते थे वो भी पाली भाषा में होते थे, और जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखी गई हैं वो भी पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, और उसी का पार्ट है स्टूडेंट्स मिलिंदपना। लेकिन स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई थी और बुद्धिज्म को काफी साल हो गए थे, उसके बाद में जो बुद्धिज्म की टेक्स्ट लिखने लगी थी वो संस्कृत लैंग्वेज में हो गई थी। And that is why when we talk about Buddhist literature, it can be divided on the basis of language, that is texts written in Pali language and the texts written in Sanskrit language. Now here in students, coming back to this particular point, Milindapana is a Pali text and it was written by a person known as Nagasen. Now Nagasen students was a Buddhist monk, and this particular text is showing us that he is having a conversation with the Indo-Greek king Meander. तो मियांडर एक बहुत ही पॉपुलर इंडो ग्रीक किंग थे स्टूडेंट्स, और नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट मंक थे, उनका कॉन्वर्सेशन इनके साथ मिलिंदपना में रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद मियांडर भी लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर बन गए थे। Apart from the students, another important text is Buddha Charita. Now this text students is written in the Sanskrit language.
by a person known as Ashwaghosh, and this, students, is also considered as the biography of Lord Buddha. यानी कि स्टूडेंट्स 3 टेक्स्ट की हम बात कर चुके हैं और तीनों ही बुद्धा की बायोग्राफीज की तरह सर्व करती हैं, तो इन तीनों को आप एक ग्रुप के साथ में इकट्ठा याद रख सकते हैं. Apart from this, students, another important text was Pragya Paramita Sutra, and this served as the most important sect for the Mahayana sect. Okay. Now, this, students, this particular text was written by a person known as Nagarjuna, and this person was famously known as the Einstein of India. Now, when we talk about the contents of Pragya Paramita Sutra, then it contains the enlightenment principles that were developed by the Bodhisattvas. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का नाम, इसको किसने लिखा है, दैट इज नागार्जुना. नागार्जुना को फेमसली क्या कहते थे, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि ये महायान सेक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. इसमें बोधिसत्वास ने एनलाइटनमेंट अचीव करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रखा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर महायान्स, एज दे लेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स जो राइज ऑफ बुद्धिज्म का पार्ट थे, which we have discussed. Now we are going to move forward and attempt 2 previous year questions that are directly based on the content that we have just studied. Now, before moving on to these questions, students, I would like to tell you that next week on the same time, we are going to continue with this particular lecture, wherein we will take up the different sects or different schools of Buddhism that emerged later. And apart from this, we are also going to take up the important some important texts that were written in the Sanskrit language by the people who had come up after Lord Buddha had died. All right, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. सेक्ट के ऊपर हमने देखा है कि पिछले सालों के अंदर पर्टिकुलरली इन 2020 एंड 2019 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि महासांगिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, स्थाविरावादन्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. Also, students, yes, as I was telling you, apart from the different sects, we are going to talk about the Buddhist councils. So as we all know, there were 4 important Buddhist councils that had happened. So we are going to talk about those Buddhist councils, who convened them, and what were the important accomplishments of these Buddhist councils. Okay, तो यहाँ तक students हमने इसका first part complete कर लिया है. Now we are going to take up 2 important questions based on this content. Now, herein, students, the first question appeared in 2020 prelims itself, wherein the question suggested that with reference to the cultural history of India, which of the following is the correct description of the term paramitas? अब पारामिता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अभी अभी देख लिया. एक जो हमने बुक के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्रज्ञा पारामिता सूत्र, इसी से हमें पता चल गया कि पारामिता का मतलब क्या होता है. फिर भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली बहुत इजी था. अगर आपको सिर्फ प्रज्ञा पारमिता का नाम ही याद है और ये याद है कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं उनको डिलीट कर सकते हैं. नेचुरली आपको आंसर मिल जाएगा. Now here in the first option says that it was the earliest Dharma Shastra text. Now Dharma Shastra text is related to Brahmanical identity, and that is why this will be an incorrect option. Next, students, the next option was also pertaining to Vedas and Brahmanical literature. So naturally, it is incorrect. The last statement was also talking about merchant guilds of South India, and that is why this is incorrect. On the other hand, students, if you look at option C, it clearly talks about the perfections whose attainment led to the Bodhisattva path. तो यहाँ पे आप बोधिसत्व टर्म देखते ही और पारामिता टर्म देखते ही आप समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच में एसोसिएशन है, एंड हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन सी. ऑलराइट, so herein the answer will be option C. On the other hand, you will also remember that paramitas are something that are perfections associated to attaining enlightenment that is given by the bodhisattva path. Apart from this, students, another important question had come up in the prelims of 2015. Now, this question had given names of 4 important kingdoms, and we were asked that among these, which are associated with the life of Lord Buddha.
अब स्टूडेंट्स इसको आंसर करने के लिए हमने अभी एक पूरी टेबल देखी थी। ये 4 ही जगह हैं स्टूडेंट्स, और ये 4 रूलर्स हैं जो कि बुद्धा के कंटेम्पररी भी थे और उनके फॉलोवर्स भी थे, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर यू गाइस टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्लियरली देखा कि कोसाला और मगध के जो रूलर्स थे वो बुद्धा के कंटेम्पररी भी थे और बुद्धा के फॉलोवर्स भी थे, and hence the final answer for this particular question will be option D, that is 3 and 4. So students, with this we have understood some important aspects with respect to the rise of Buddhism in ancient India. I hope you have understood all the topics thoroughly. As I have already told you, there will be a second part to this particular lecture that will be conducted next week on the same time, wherein we are going to talk about the different sects that proliferated as a part of Buddhism. And also students, we are going to talk about the 4 important Buddhist councils. तो यहाँ पे students मैं इस lecture को खत्म कर रही हूँ. Now, if you have any questions, please come up with it. Hi, Aman. Thank you so much for joining us. If you have any doubts, please put it forward. All right, students. So while you are coming up with your questions, I would like to tell you that please don't forget to subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Also, students, don't forget to visit our app and website, that is Skholar IAS, wherein we are curating amazing content for you guys with respect to your UPSC and state PSC exams preparation. We have a lot of free content, students, that is available on our website pertaining to the current affairs preparation. That will be very, very helpful for you. Students, if you have any questions, please come up with it. All right, students, so I'm assuming you have no questions as of now. In case you find any query pertaining to this particular topic or any other general question with respect to your UPSC preparation, feel free to comment in the comment section below and we are going to answer each and every of your query. So students, with this, I am completing my lecture. Thank you so much for joining me and have a nice day.